Hello, friends. Hello, friends. Welcome to Ray Academy and welcome to my new live class. And in this class, friends, we are going to cover a weekly current affairs. And this is for you can say the first week of April. And this is one of the most important class for your upcoming examination. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज हम लोग जो है वीकली करंट अफेयर करने जा रहे हैं और इसमें हम सर लोग मोस्ट सर टॉपिक साउंड का होगा वॉल्यूम बहुत आपका लो है सर। सर साउंड का वॉल्यूम लो वॉल्यूम है। बहुत लो है सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। एक मिनट से सर अब साउंड सही है। जी सर सर। ओके सो hello friends, welcome to Ray Academy and welcome to my new live class. And in this class, friends, we are going to cover weekly current affairs and I hope कि आप लोग का सब कुछ ठीक होगा। Am I audible? यस सर, यस सर, Yes, यस। sir. Okay, thank you Yes, so sir. much. So in this class, we are going to cover weekly current affair, and this is for first week of April. And in this class, we'll discuss top most important topic for your upcoming examination, not only for prelims, also for mains examination. Because if you'll crack the prelims examination and after that if you are not able to crack the mains examination, तो कहते हैं ना आपका जो पूरा तैयारी जो होता है फिर से एक साल आपका उसमें जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अप्रोच भी होना चाहिए, वी शुड ऑलवेज फोकस, यू कैन से कि प्री कम मेंस अप्रोच. So in this class we'll cover a topic according to mains and prelim. So I told you, first of all we'll discuss our uh, neighboring countries, Maldives. So first of all, we'll start with the India's Maldives relation and the changing pattern. And then also we'll discuss fifth BIMSTEC summit, because fifth BIMSTEC summit is very very important, and we'll discuss BIMSTEC as a for you can see na ki what are the relevant fact of BIMSTEC for UPSC and also for state service. Ki which type of question maybe UPSC or state service may ask. And then after that, we'll discuss a topic related to minorities. Okay, because we had a discussion on minorities. We have already discussed about the article 29 and 30. हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आज भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट विल डिस्कस अ टॉप मोस्ट टॉपिक जो अभी चल रहा है न्यूज में इकोनॉमी का, दैट इज स्टैगफ्लेशन। जो आज स्टैगफ्लेशन है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, and then also we'll try to understand what are the differences between the inflation and stagflation. And then I will try to cover startup India initiatives, and we had a discussion on Sri Lanka's economic crisis. So if okay, अगर मैं मैनेज कर पाऊंगा टाइम तो श्रीलंका के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसको भी मैं आपको बताऊंगा. So now let's start our discussion with the first topic, and the first topic is related to changing relation. Okay, changing
relation of India with Maldives. So Maldives is very very important. We'll have to understand. Okay, and this topic is related to General Studies paper 2, which subject IR, International Relation. And this topic is very very important for your prelims examination, जनरल स्टडीज पेपर, एंड ऑल्सो अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल है, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं इसमें हर एक चीजें जो है कवर करने की कोशिश करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ context. What is the context? We'll have to understand. Our external ministers, our external minister, okay, Dr. S. Jaishankar visited Maldives, and after he got an invite from his Maldivian counterpart and held extensive discussion on the bilateral relationship between the India and Maldives. सो जयशंकर ऑलरेडी आप सभी को पता होगा, फॉर्मर डिप्लोमेट, एंड ही इज डूइंग फैबुलस जॉब। अभी अगर आप देखोगे इंडिया का जो हमारा रिलेशन है बहुत सारे नेबरहुड के साथ अच्छा हुआ है। उसके साथ ही अगर आप देखोगे कि इंडिया के पर्जेंस डोमिनेंस भी हम लोग कहे तो आपका ये क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। So basically, Jaishankar, 5-day visit. Jaishankar visit was a 5-day visit, and it is a part of India's attempt to proactively reach out with the project and initiatives to counter China's influence in Maldives. China influence in Maldives. Okay. So basically, चाइना इन्फ्लुएंस इन मालदीव, ओके, यू कैन से ना कि इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो सी को काउंटर करने के लिए हमारे इंडियन जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी गए थे। एंड एट प्रेजेंट अगर आप देखो कि चाइना का कितना सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, अगर आप लोग को पता हो तो श्रीलंका में जो उसके पॉलिसी है उसको लेकर के क्रिटिसिज्म किया जा रहा है ना। सो अब बहुत सारे कंट्री अपने आप को, हम लोग कहते हैं ना कि चाइना से जो चाइना के डेप्ट ट्रैप में नहीं फंसना चाहते, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस अबाउट द एक्सटर्नल अफेयर्स okay visit. So first of all we'll have to understand the background. What is the background of this topic? Okay, yeah, what is the background of India Maldives relation? Basically India and Maldives share ethnic, linguistic, cultural, religious, commercial links. So basically we can say कि India and Maldives share culture, okay, culture, then ethnicity, ethnic, okay, ethnicity we can say, and also we can say कि इंडिया एंड मालदीव शेयर अ कॉमन इंटरेस्ट। ओके, भारत और मालदीव का एक कॉमन इंटरेस्ट भी है, उसकी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली इंडिया मालदीव के बीच आपके कमर्शियल लिंक्स जो हैं ये भी आपको दिखाई देगा। ओके, कमर्शियल लिंक्स दैट मीन्स की बायलेटरल ट्रेड, विल डिस्कस बायलेटरल ट्रेड, बायलेटरल ट्रेड। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बायलेटरल ट्रेड। एंड देन फ्रेंड्स उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता है कि इंडिया वाज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस इन 1965। इंडिया जो पहली कंट्री है जो 1965 में जब मालदीव आपका उसे फ्रीडम मिलता है जिसे हम कहते हैं, तो फर्स्ट कंट्री जो आपका इंडिया ही था जो रिकॉग्नाइज किया था आपको मालदीव को, and later established its mission at Male in 1972. Male in 1972. When? In 1972. Okay. So we can say कि मालदीव के लिए इंडिया का इंपोर्टेंस बहुत ज्यादा, बहुत सारे कहानी भी है उसमें, है ना। So Maldives proximity to the west coast of India and its situation at the hub of commercial sea lanes running through the Indian Ocean and its potential to allow a third nation naval presence in the area in the Indian Ocean, and it with significant strategic importance for India. So मैं आपको अभी एक इमेज भी दिखाऊंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मालदीव का क्या आपका इंपोर्टेंस है इंडिया के लिए। वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं आपको मैप दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, आप समझ जाओगे। अगर आप देखोगे कि ये आपका मालदीव है ना, तो ये आपका पार्ट है इंडियन ओशियन का, आपको पता ही है। ये हमारा अरेबियन सी है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी से यहाँ पर क्या होता है, मानसून स्टार्ट होता है, मानसून का पॉज होना हम लोग कहते हैं, है ना।
So basically, Persians, yes, सर सर डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है सर। disconnected हो रहा है। सर टोटली डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है सर। ना ना आवाज भी नहीं आ रहा सर। फिर पूरा पूरा वाइब्रेट हो रहा था सर। अब और एक बार ये, बोलिए सर। हाँ हाँ, ठीक है अब। हाँ सर अभी ठीक है सर। ओके ओके सर। ये ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं, कहीं आपके पास सभी को प्रॉब्लम हुआ है क्या? सर वो नेटवर्क ये सर, इशू है। ये सर वॉइस ब्रेक हो जैसा रहा लग था रहा था आपका। सर आपका नेटवर्क इशू है जैसा लग वॉइस रहा सर था ब्रेक सर। हो रहा है। हाँ बस ब्रेक हो रहा था सर। नेटवर्क इशू तो नहीं लग रहा, पता नहीं। चलिए ठीक है, अभी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। सो बेसिकली मैंने आपको बताया कि अगर आप देखोगे कि पर्जेंस ऑफ मालदीव इन इंडियन ओशियन जो है, वो आपका बहुत इंपोर्टेंट बना देता है मालदीव को इंडिया के लिए, इंपोर्टेंट बना देता है मालदीव को इंडिया के लिए। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मालदीव जो है वो स्ट्रैटेजिकली, अगर आप देखो इन इंडियन ओशियन टू काउंटर चाइना, वो भी क्या है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस देता है आपको मालदीव को इन इंडियन ओशियन। And basically, we can say that India has a preeminent position in the Maldives, and with relation extending to virtually most areas. And there is a policy of India. We'll discuss neighborhood first policy. So India's policy of neighborhood first and Maldives policy of India's first seem to be in absolutely sync with each others. So what is India's neighborhood first policy? We'll have to discuss. Basically, you can see कि it is a core component of India's foreign policy. Okay, and focuses on peaceful relation and collaborative, synergetic co-development with its Southern Asian neighbors or Southern Asian countries. And basically, we can say now that India's neighborhood first policy talks about related to economic relation, talks about technological relation, talks about research and education, and also basically connectivity. Connectivity, which types of connectivity? Digital connectivity, because we are living in globalization era, and connectivity with surface, that means the road, okay, and also air transport. So please keep in the mind. एंड फॉर इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करते हैं या सदर्न जो एशियन कंट्रीज है उसकी बात करते हैं, तो उन सभी के लिए एनर्जी जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोग को पता ही होगा, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। साथ ही में अगर आप देखो एक बहुत ही न्यूज में है रशिया यूक्रेन को लेकर के तापी पाइपलाइन, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन। ओके, सो बेसिकली वी कैन से कि energy is a common subject for India and also southern Asian countries. And there should be also energy grid connectivity, energy grid connectivity. And then India's neighborhood first policy also talks about a focus on logistic chain. Okay, and India's neighborhood first policy talks about the space cooperation, space program, defense security, environment, and climate change. Okay, so this is very very important. You'll have to keep in the mind India's neighborhood first policy. What is India neighborhood first policy? I told you. And then, friends, also we can say कि India's neighborhood first policy is important to note that the broad bilateral ties between the two countries rest on the foundation of mutual trust. Two countries means India's and Maldives. Okay, India's and Maldives. So basically, countries rest on the foundation of mutual trust, then understanding and sensitivity to each other's concern. Now let's come and let's discuss a quick fact for the prelims examination. So आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, मे बी आई होप कि सभी को क्लियर होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। क्लियर है एनीवन, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर नो सर। ओके, सो इज इट क्लियर है ना? सो नाउ अब आगे बढ़ते हैं। इंडियाज का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में ही अगर आप देखोगे तो इंडियाज का मालदीव रिलेशन भी आता है, और इसीलिए आई टोल्ड यू इन बिगनिंग कि इंडिया वांट्स टू काउंटर द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन मालदीव. So what are the important quick facts about Maldives? So first of all,
मालदीव इज लोकेटेड इन द इंडियन ओशियन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है कि इंडिया जो आप देखोगे मालदीव कहाँ लोकेट करता है, इंडियन ओशियन में, इंडियन ओशियन में लोकेट करता है, इंडियन ओशियन में मालदीव लोकेट करता है ना। उसके साथ ही अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक मालदीव इज एन archipelago and comprising approximately 1200 island, 1200 island just like Lakshadweep, 1200 islands, 1200 islands, okay, please keep in the mind, and with a geographical spread over 90,000 square kilometer area, 90,000, okay, square kilometer. कोई मुझे बता सकता है, एनीवन कुड यू टेल मी कि व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया, एनीवन कोई बता सकता है व्हाट इज द एरिया ऑफ इंडिया? एनीवन, कोई भी? इफ यू डोंट नो प्लीज से कि सर आई डोंट नो, ओके, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप लोगों के साथ कुछ नहीं, इंटरेक्शन ही नहीं होगा इसी ये। Sir, 3.28 million square kilometer. ओके, वेरी गुड 32,87,263 square kilometer, very good. And India's rank according to area in the world? Sir, 7. Okay, very good. So now let's thank you. So now let's move ahead and let's discuss. I told you कि Maldives is just like you can say a group of island, a lump sum 1200 islands and geographical area 90,000. And friends, Maldives incorporate 26 atolls. Okay, and Maldives is one of the third, also you can say one of the world's most geographically dispersed country, and is a 99% वाटर्स नेशन, इसे जो वाटर्स नेशन के रूप में भी बोला जाता है, वाटर्स नेशन, बहुत वाटर है, वाटर्स नेशन, ओके। एंड देन लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस कि मालदीव इज द लोएस्ट लाइंग कंट्री ऑन द प्लैनेट, लोएस्ट लाइंग कंट्री, लोएस्ट लाइंग country, okay, lowest lying country in the planet, and with the highest elevation being just you can say 2.3 meters, lagbhag 7 feet 7 inch above the sea level, and the archipelago has the world's lowest naturally occurring highest point, okay. So basically we can say na ki Maldives is the lowest lying country on the planet in the world. So now, what are the areas of cooperation between India and Maldives? So what are the areas for cooperation? Okay, areas for cooperation. So let's start. First of all, there is an area of security cooperation. Okay, security cooperation. Basically, through the decades, India has rushed emergency assistance to the Maldives whenever sought. And in 1988, when armed mercenaries attempted a coup against President Mamoon Abdul Gayoom, so Operation Cactus was announced by the India. Operation Cactus, please keep in the mind. Operation Cactus, ओके, जो ऑपरेशन कैक्टस आपका लॉन्च किया गया था उस टाइम जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे मामून अब्दुल गयूम, उनको बचाने के लिए, and operation cactus was announced where India sent okay paratroopers and navy vessels and restored the legitimate leadership. And also in security cooperation, in December 2021, India and Maldives conducted the 11th edition of military exercise Ecuadorian, okay, Ecuadorian, please keep in the mind, military exercise Ecuadorian, okay, military exercise Ecuadorian. Military exercise very very important for state service and also for UPSC. एंड फ्रेंड्स, जो इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो है किसके ऊपर फोकस किया, फोकस ऑन इनहांसिंग सिनर्जी एंड इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन आर्म फोर्सेस ऑफ बोथ द नेशन, ओके। सो फर्स्ट एरिया अगर आप देखोगे सिक्योरिटी कोऑपरेशन, एंड सेकंड फर्स्ट एरिया सिक्योरिटी, ओके, एंड सेकंड इज डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर management, okay.
So second area is disaster management. Basically, the 2004 tsunami and the drinking water crisis in Malay were occasions when India rushed to the assistance of Maldives. And also, friends, during COVID-19 pandemics, okay, the Maldives has been the biggest beneficiary of the COVID-19 assistance given by India. And in fact, also we can say that Maldives was the first country to receive COVID-19 vaccine from India when India gifted 1 lakh doses, okay, in January 2021. And friends, when the world supply chains were blocked because of the COVID-19 pandemic, India continued to provide crucial commodities to the Maldives under Mission Sagar. Under Mission Sagar, okay. So please keep in the mind Mission Sagar. Mission Sagar. And then, friends, there is areas related to people contact. Okay, people to people contact. So third area should be people to people contact. People to people contact. Okay, people to people contact. So technology has made connectivity easier for everyday, okay, contact and exchanges, just like social media platforms. Okay, Maldivian students attend educational institution in India, and also patient fly, okay, here for super specialty healthcare, and aided by a liberal visa free regime extended by India. And then also, friends, creation of a air travel bubble, okay, to facilitate movements of peoples from both sides for employment, tourism, medical emergency. And the Maldives was the first neighboring country with which an air bubble was operationalized. Air bubble was operationalized. So basically, we can say that India and Maldives focus on people to people contact. Okay, people to people contact. So मालदीव्स के जो लोग हैं वो आपके एजुकेशन के लिए, दैन ऑल्सो फॉर हेल्थ केयर के लिए जो अपने इंडिया में आते हैं, अपने इंडिया में आते हैं. Now, then there is also problem in you can say na ki Maldives, for that means ki there is a word, okay, India out sentiments in Maldives. So basically, India Maldives relation deteriorated during the progressive party, okay, 5 years rule, when Abdullah Yamin Abdul Gayoom of the, you can say na ki progressive parties of Maldives became president in 2013. And the anti-India sentiment was apparent even back then. Okay, back then. Also, we can say that there is India out sentiment. India out sentiment. Basically, ये जो था आपका मालदीव में 2013 में स्टार्ट होता है. 2013 में स्टार्ट होता है. और ये स्टार्ट होता कब है कि जब 2013 में प्रोग्रेसिव पार्टीज ऑफ मालदीव, पीपीएम कहते हैं, प्रोग्रेसिव पार्टीज ऑफ मालदीव्स के एक प्रेसिडेंट जो हैं वो बन जाते हैं अब्दुल्ला यमीन अब्दुल गयूम. ओके, और उसी के बाद अपने इंडिया को लेकर के बहुत सारे क्रिटिसिज्म वहां पे स्टार्ट होता है. एंड फ्रेंड्स, अ लॉट ऑफ इंडिया एंटी इंडिया words was used during that time because the Maldivians government was pro China. Okay, pro China. And then there is economic cooperation. What economic cooperation? Next, economic cooperation. Okay, so economic cooperation, what is the economic cooperation? Basically, we can say ki tourism is the mainstay of Maldivian economy, and the Maldives is now a major tourist destination for Indians, and also it is a job destination for others. And friends, the significant turnaround India's relation with Maldives and Haiti is a prominent example of our coming adversity in our neighborhood diplomacy. So basically we can say ना कि हमारा अगर आप देखोगे तो जो आपका मालदीव्स के जो इकोनॉमी है, इट इज बेस्ड ऑन द टूरिज्म. एंड बहुत सारे लोग, बहुत सारे इंडियंस जो मालदीव्स को विजिट करना चाहते हैं. तो जब भी आपका टूरिज्म सेक्टर इनहांस होता है, इट लेड टू द इनहांसमेंट इन जीडीपी, it led to the enhancement in employment. Okay, so please keep in the mind. And then friends, also we can say ki India and Maldives focus on connectivity and civilian infrastructure. And there is you can say na ki 7 major projects under India line of credit, under India line of credit.
and $800 million. Okay, you can say India has announced $800 million for you can say development of the various project in Maldives. And also before few days, okay, India announced $400 million for another types of projects. And now, friends, there is a Greater Malay connectivity project, and India announced $100 million. Okay, for the Greater Malay connectivity project. So basically, no need to go in detail, but we can say ना कि इंडिया का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स है मालदीव में. एंड क्यों ये इतना इन्वेस्टमेंट्स है? क्यों? बिकॉज इंडिया वांट्स टू काउंटर द पर्जेंस और डोमिनेंस ऑफ चाइना इन मालदीव. ओके, so what are the significance of Maldives for India? Anyone, could you tell me what are the significance of Maldives for India? क्या बता सकते हो आप लोग? सर डिस्कनेक्टेड हो रहा है सर. हाँ Hello, हाँ हेलो. South Asian countries sir. sir having Actually, sea Just a minute, one by sea one, एक ही बार one by one. डिस्कनेक्टेड हो जा रहा है सर आपका. the sea route connection Yes, okay. to India through different ports. Okay, okay, just a minute, Manu, just a minute. Please raise your hand and I will go through one by one. Please raise your hand. Okay, Manoj, tell me. The sea route connection through India to different ports of India. To Southeast, it is Okay, also very good. a channel to the other South Asian countries like Indonesia, Singapore, and Mm-hmm. Malaysia, Okay, through which India can increase its trade and relationship. okay, very good. Anyone? कोई और? Manoj तो बता रही है. Okay. So now I'm going to tell you. Please keep in the mind. So first of all, significance we have already discussed. Strategic importance. Okay, strategic importance. Just like we can say that Maldives is geographically positioned like a toll gate between Western Indian Ocean and checkpoint of the Gulf of Aden. Okay, and then the state of Hormuz. On the one hand, okay, it is very important. Important, and also you can say ki there's economic values. Okay, so Maldives is situated at the hub of commercial sea lanes running through the Indian Ocean, and more than 90% of India's international trade by volume and 75%, okay, by value passes through the Indian Ocean region. And then Maldives has also potential to allow a third nation naval presence in the Indian Ocean. And then there is also political and regional security. Okay, so since China's naval expansion into the Indian Ocean, Maldives' significance has steadily grown, and now it's the heart of international geopolitics. And friends, moreover, the Maldives is an important aspect of India's neighborhood first policy. And then presence of Indian community in Maldives, it is also a significance, okay, of the Maldives for India. And then Maldives is the member of the SAARC, okay, South Asian Association for Cooperation, and the South Asia Sub-Regional Economic Cooperation, SASIC. Okay, so there are lots of significance of the Maldives for India. And then now let's move ahead and let's discuss about you can say na कि what should be the way of forward. Basically we can say कि both countries, जो ये दोनों कंट्री को साथ में आकर के बात करना चाहिए, एंड चाइना के डिप ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए, नहीं तो श्रीलंका जैसे हालत हो सकता है ना. सो इंडिया बिलीव्स इन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एंड इंडिया जो है आप देखोगे कि आपका मालदीव्स को बहुत सारा हेल्प भी किया है. अभी जो मैंने आपको बताया कि $800 का क्रेडिट, $800 million का, फिर 400 million का, फिर 100 million का. बेसिकली इंडिया इन्वेस्टेड लॉट्स ऑफ, यू कैन से ना, देयर इज लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया इन मालदीव्स. ओके, सो ये हमारा टॉपिक है. तो क्लियर है इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन को लेकर के? yes, sir. Okay, so now let's move ahead and let's
let's discuss about a new topic. A new topic is also very, very important topic. Okay, so now I'm going to discuss about the new topic, and the new topic is fifth BIMSTEC summit. Fifth BIMSTEC summit. सो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया था. या फिफ्थ बिमस्टेक समिट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि दिस टॉपिक इज related to international relation. This topic is related to international relation. Okay, IR एंड ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉपिक्स है उससे भी ये रिलेटेड हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट. ओके, so our Prime Minister Narendra Modi recently participated in fifth BIMSTEC. What is the full form? Or BIMSTEC stands for? Without cheating, आंसर दे सकते हो क्या? BIMSTEC stands for? Sir, multi-sectoral technique. Okay. BIMSTEC stands for Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. What? Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation. So, Prime Minister Narendra Modi recently participated in the fifth BIMSTEC summit and hosted in virtual mode by Sri Lanka. Okay, so Sri Lanka is the current chair, you can say chair of BIMSTEC, chair of BIMSTEC. And now let's discuss about the fifth BIMSTEC summit, because this is very, very important. So basically we can say ki fifth BIMSTEC summit, and the theme, what was the theme? The summit's theme was towards a resilient region. शायद मैं जब स्लाइड पे जाता हूँ तो आपका रुक जाता है, जहां तक मुझे लगता है. ओके, कोई नहीं, मैं आपको बता दूं. टुवर्ड्स अ रिसिलियंट रीजन, टुवर्ड्स resilient resilient region, prosperous economic. Okay, prosperous economies, prosperous economies and healthy people. Healthy people. Okay, and the main outcome of the fifth BRICS summit was the adoption and signing of the BIMSTEC charter. So during the fifth BIMSTEC, एक आपका क्या पास हुआ? BIMSTEC charter. BIMSTEC charter. Okay, main outcome BIMSTEC charter. And BIMSTEC charter formalized the grouping into an organization made of members states that are littoral to and dependent upon Bay of Bengal. Bay of Bengal. Then आप लोग को पता ही होगा कि बे ऑफ बंगाल इंडिया के इस साइड में जो आपका आता है, ईस्टर्न कोस्ट वाला जो इलाका होता है, बे ऑफ बंगाल, है ना. And friends, the fifth BRICS summit also saw considerable progress being achieved in the BIMSTEC connectivity agenda, with the adoption of the master plan for transport connectivity by leaders, which lays out a guidance, okay, framework for connectivity related activities in the region, BIMSTEC region. And three BIMSTEC agreement were signed. Which represents progress being achieved in ongoing cooperation activities. Okay, so no need to go remember. And friends, there are three BIMSTEC agreements. So first, BIMSTEC Convention on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Then BIMSTEC Memorandum of Understanding on Mutual Cooperation in the field of diplomatic training. And last one, Memorandum of Association on establishing a BIMSTEC technology transfer facility. Okay, so now for prelims examination, we'll have to cover the facts related to BIMSTEC. What are the major facts related to BIMSTEC? We'll have to cover. So basically अगर आप देखोगे, so BIMSTEC, I told you, it stands for the Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation, and it is a regional multilateral organization, and its members lie in the littoral and adjacent area of Bay of Bengal, and headquarters is situated in Dhaka, Bangladesh.
and there is 7 members, and 7 members, in 7 members 5 are from South Asia, Bhutan, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड 2 फ्रॉम साउथ ईस्ट एशिया, म्यांमार एंड थाईलैंड। तो इसके मेंबर्स को याद रखना बहुत ही इजी है, बी मिस्टेक को भूलना मत, बी मिस्टेक को भूलना मत। कैसे, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो ट्रिक हो जाएगा, बी मिस्टेक को भूलना मत। देखो, सो बी से आप रख लो बांग्लादेश या भूटान भी आप रख सकते हो, बांग्लादेश। आई से इंडिया, ओके। एम से मालदीव, नॉट म्यांमार, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज, ओके। एम से मालदीव, एस से श्रीलंका, एस से श्रीलंका, एंड देन देयर इज अ टी, टी से थाईलैंड, ओके। एंड देन आफ्टर दैट बी मिस्टेक को भूलना मत, इस बी से भूटान, ओके। एन से नेपाल, एन से नेपाल, एन से नेपाल, हो गया। और मत तो ऐसे ही साइलेंट जो है अपना याद रख सकते हो। सो आप बी मिस्टेक कंट्रीज को यू कैन इजिली रिमेंबर कि बी मिस्टेक को भूलना मत, ओके। सो दैट मीन्स कि बांग्लादेश, देन देयर बी इंडिया, देन मालदीव्स, ओके। एंड सॉरी, मालदीव बोल रहा हूँ, म्यांमार, मालदीव लिखवा दिया, कंफ्यूज हो गया था, हाँ, म्यांमार, नॉट मालदीव, सॉरी, ओके, म्यांमार, and then there is Sri Lanka, then Thailand, okay, and after that Nepal. Okay. So please keep in the mind. And friends, B mistake is not only connect South and Southeast Asia, but also the ecologies of the Great Himalayas and the Bay of Bengal, and the Bay of Bengal. So, and also B mistake talks about, or B mistake mainly aims is to create an enabling government for rapid development, accelerate social progress, promote collaboration on matters of common interest in the region. In the region means basically we can say Himalayan regions and Bay of Bengal regions. And uh, Asian Development Bank, okay, Asian Development Bank has become BIMSTEC development partner since 2005. And Asian Development Bank, why? To undertake a study which is designed to help promote and improve infrastructure. In which type of infrastructure? Transport infrastructure and logistic among the BIMSTEC countries. So Asian Development Bank has already finished the project so-called BIMSTEC Transport Infrastructure and Logistic Studies. So please keep in the mind, Asian Development Bank, a major partner of BIMSTEC, major partner of BIMSTEC. Okay, and friends, also we'll have to keep in the mind कि how BIMSTEC is significant for India. Anyone, कोई आप गेस कर सकते हो? मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ BIMSTEC का, ठीक है। तो चलो तब तक आप लोग बताओ कि बीमस्टेक का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया को लेकर के। सर पता नहीं है सर। ओके चलो Sir, मैं बताता as India, sir, the small countries they are involved in BIMSTEC. So India wants to be to supersede China. To supersede China, India wants to create a good trade relationship with other countries, and also want to be a powerhouse of the Asia, Asia continent. Okay, so first of all, let's see the map, and after that we'll discuss. You can see now कि map. First of all, अगर आप देखोगे this one कि बे ऑफ बंगाल के साइड वाला, and this one is Arabian Ocean, we have already discussed. Okay, so first country BIMSTEC को अगर याद रखते हैं यहीं से शुरू करते हैं. So first one is Bhutan. Okay, first one is Bhutan. Second India, and third one is Myanmar. Okay, and then fourth one is Sri Lanka. Okay, and then there is Thailand. Fifth one Thailand. BIMSTEC, ओके, को भूलना मत. सो देन उसके बाद आ जाएगा आपका नेपाल. तो 6 जो हो गया आपका नेपाल जो है ये हो जाएगा. ओके, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करते हैं कि BIMSTEC में अगर आप देखोगे तो मैंने कंट्री का नाम बताया, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार एंड ऑल्सो थाईलैंड.
So Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka from the South Asia, and 2 countries, Myanmar, Thailand from the Southeast Asia. Southeast Asia. Now let's discuss how BIMSTEC is significant for India. So first of all, BIMSTEC provides a new platform for India to engage with its neighbors, with South Asian Association for Regional Cooperation, becoming dysfunctional because of different, also you can say differences between India and Pakistan. So BIMSTEC allow India to pursue 3 core policies. First, neighborhood. First, neighborhood. Neighborhood policy. Okay, India's first neighborhood policy. And also you can say it is primacy to the country's immediate, okay, periphery. And then second policy, actist policy. Okay, Act East policy. And Act East policy connect India with Southeast Asia and the economic development of India's northeastern states. Okay, economic development of northeast region of India. Northeast region of India. Okay, northeast region of India. So by linking them to the Bay of Bengal region via Bangladesh and Myanmar. And also, BIMSTEC allow India to counter China's creeping influence in countries around the Bay of Bengal due to the spread of its One Belt and One Road initiative. And BIMSTEC is of utmost significance to India as it is a major support in implementing Act East policy and the development of its ambitious Sagarmala project. What Sagarmala project? सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया का है और बोला जाता है कि ये चाइना के जो पर्जन्स है उसके काउंटर करने के लिए है। किसके लिए? उसके काउंटर, कौन से काउंटर? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसी को काउंटर करने के लिए। ओके, सो सागरमाला प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज लॉजिस्टिक सेक्टर। ओके, and this program envisages unlocking the potential of waterways and the coastline to minimize infrastructural investment required to meet these targets. So we'll discuss in upcoming classes also about in upcoming classes related to this. Okay, so Sagarmala project, please keep in the mind, अपने इंडिया में जितने भी मेजर प्रोजेक्ट पोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने का, चाहे आपका ईस्टर्न कोस्ट पे हो चाहे आपका वेस्टर्न कोस्ट पे, उसको कनेक्ट करने का जो हम लोग कहते हैं, तो यही इंडिया का सागरमाला प्रोजेक्ट है। ओके, सो सागरमाला प्रोजेक्ट अपने आप इंडिया में हाउ मेनी स्टेट्स हैज कोस्ट लाइन? हाउ मेनी स्टेट? कितने स्टेट में कोस्ट लाइन है, तटीय रेखा? सर 9 स्टेट्स में 9 countries, 9 Yes. states, sir, 9 states. यस 9 स्टेट्स। सबसे ज्यादा गुजरात। सर गुजरात है। गुजरात। सबसे गोवा। वेस्ट बंगाल। नहीं, सबसे कम वेस्ट बंगाल में है आपका पोर्ट। सो नाउ लेट्स मूव अहेड एंड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये टॉपिक, ओके, बीमस्टेक से रिलेटेड कि 5th बीमस्टेक समिट्स एंड आल्सो वी हैव डिस्कस की इंपॉर्टेंस ऑफ बीमस्टेक फॉर इंडिया। सो इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? एनीवन? Sir, BIMSTEC members hold their meeting annually. यस, बट इट कैन बी सस्पेंडेड। और जैसे ब्रिक्स में होता है ना कि ब्रिक्स में जो मीटिंग होते हैं वो आपका जो वर्ड के थ्रू चलता है, जैसे कि मान लो कि अभी इस साल इंडिया के पास है तो अगले साल वो चाइना के पास होगा, ऐसे करके चलता है। तो जो बीमस्टेक की अगर हम लोग बात करते हैं तो बीमस्टेक में भी अगर आप देखते हो तो पहले ये फॉलो किया गया था बीमस्टेक को लेकर के कि इसमें जो मीटिंग होगा वो आपका जो वर्ड वाइज चलाया जाएगा, लेकिन फिर जो इसे रोक दिया गया, लेकिन इसके एनुअली ऑलमोस्ट जो है आपका होता है।
और ये आपका जो देखोगे ये 1997 में बैंकॉक डिक्लेरेशन से आया था, 1997 में जो बैंकॉक डिक्लेरेशन है। एंड फिर 1997 में होता क्या है कि इसका नाम भी चेंज होता है, पहले इसे बिस्टेक बोला गया था, BISTEC, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका एंड थाईलैंड, लेकिन बाद में फिर इसमें म्यांमार भी जुड़ता है 1997 में ही, तो इसका नाम बिमस्टेक हो जाता है। फिर उसके बाद 2004 में इसमें नेपाल, भूटान, ये सब जो है जुड़ता है, बहुत सारी चीजें। हाँ, और कुछ? सर ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है ये किसके साथ हुआ था? नहीं, सागरमाला प्रोजेक्ट अपने इंडियन गवर्नमेंट का है कि जो हमारा दोनों बॉर्डर्स, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट या इंडिया कोस्ट, आप यहाँ देखो बहुत सारे पोर्ट्स हैं, है ना, दोनों साइड में, तो इस सारे पोर्ट्स को कनेक्ट करके, ठीक है, उसको इन्हांस करना, उसके पावर्स को इन्हांस करना। बेसिकली अगर बात करोगे बीमस्टेक में अगर हम लोग जाते हैं तो 2-3 जो प्रोजेक्ट्स है कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, वो याद रखना है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड म्यांमार का है। दैन फिर एशियन ट्राइलेटरल हाईवे है कनेक्टिंग इंडिया, थाईलैंड थ्रू म्यांमार। दैन जो है BBIN है एक, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ओके, तो ये 3 जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं वो याद रखना है, क्योंकि ये सब न्यूज में रहता है, सो में भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। सो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट्स इंडिया एंड म्यांमार, then Asian Trilateral Highway connecting India and Thailand through Myanmar, then Bangladesh, Bhutan, India, Nepal motor vehicle agreement, okay, and for seamless flow of passenger and cargo traffic. So ये connectivity projects आपको ध्यान में रखना है। Now just a minute. अब भनीमान एक चीज पूछा था मीटिंग को लेकर के। मीटिंग जो है फर्स्ट मीटिंग 2004 में हुआ था, लेकिन ये एनुअली नहीं, सॉरी, और ये बाइनरली ऑलमोस्ट होता है, हर एक 2 सालों पे होता है, ठीक है। तो अभी तो आपका श्रीलंका ने चेयर किया था। नाउ लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट टॉपिक, असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट। असम मेघालय बॉर्डर डिस्प्यूट पार्शली रिजॉल्व्स, ओके। सो हमें डिटेल में नहीं जाना है, हम फोकस नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू, यू कैन से ना, कवर दिस टॉपिक्स इन डिटेल, बट बॉर्डर डिस्प्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अपने इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स का जो है आप देखोगे तो आपका जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स दिखाई देगा, जो हमें पता होना चाहिए, ओके। सो अगर देखो तो सबसे पहले आपका असम का, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं सभी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपका रहता ही है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं हुआ क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये अगर बात करते हैं, दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू पॉलिटी एंड गवर्नेंस, आल्सो इंटरनल सिक्योरिटीज। So signing of Assam Meghalaya deal to resolve the border dispute between the two states. And so what was the border dispute between Assam and Meghalaya? During the British, Assam consisted of the present day Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya and Mizoram. Okay, so एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे जो हमारे 4 स्टेट है वो भी किसके पार्ट्स थे? असम के ही पार्ट्स थे। तो असम में आपका कौन कौन सा आता था? अगर ब्रिटिशर के समय हम लोग देखते हैं तो आपका एक जो है नागालैंड जो है ये, ओके, एंड देन नेक्स्ट वन अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, मेघालय, चलो, एंड मिजोरम ऑल्सो, मिजोरम, ओके। So during British period, and friends, the long-standing dispute between Assam and Meghalaya began in 1972, when Meghalaya was carved out of Assam under the Assam Reorganization Act 1971, and the border issue came out as a result of different
readings of the demarcation of the boundaries, okay, in the initial agreement. And Assam Meghalaya border disputes includes the area of Upper Tarabari, okay, then Gajang Reserve Forest, then Hahim, okay, then there is Langpi, Borduar, then Boklapara, Nogao, then there is Matamur, okay, no need to remember these areas now, but there is a dispute, okay, between Assam and Meghalaya. So what are the salient features of border agreement between Assam and Meghalaya? Basically, friends, through this deal, Assam and Meghalaya has partially resolved a 50 years old border dispute in the 6 of the 12 sector along their 885-kilometer boundary. So Assam Meghalaya also we can say share 885-kilometer boundaries, okay, 885 kilometer. And the deal was signed by the Chief Minister of Assam, Himant Biswa Sharma, and his Meghalaya counterparts, okay, Konark Sangma, in the presence of Union Home Ministry. Okay, and friends, the 6 disputed sector whose issues has been resolved are Tarawadi, then Gajang, Hahim, Boklapara, Khanapara. Okay, then there is also Plangta. So no need to remember. Okay, ये सारे डिटेल में नहीं जाना है. But you will have to keep in the mind कि असम and मेघालय के पूरा आपका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ है, पार्शली सॉल्व हुआ है, जो कि अच्छा है. एक हम लोग कहते हैं कि गुड इंडिकेशन है कि इन अपकमिंग टाइम जो और भी डिस्प्यूट्स है उसको सॉल्व किया जा सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखो आपके स्क्रीन के ऊपर कि असम का मिजोरम के साथ 164.6 किलोमीटर का, असम मेघालय लमसम 885 किलोमीटर्स, असम वेस्ट बंगाल 127 किलोमीटर, असम त्रिपुरा 46.3 किलोमीटर, असम मणिपुर 204.1 किलोमीटर, असम अरुणाचल प्रदेश 804.1 किलोमीटर, and Assam and Nagaland 512.1 kilometer. Okay, so please keep in the mind. Do you know in India there is also various state there is border disputes. क्या पता है कोई आप स्टेट्स का? अभी एक न्यूज में था चंडीगढ़ को लेकर के, आप जो हरियाणा, पंजाब, ओके, और भी हैं, बहुत सारे हैं. कोई आप बता सकते हो? उड़ीसा का है क्या किसी के साथ? सर आंध्र प्रदेश का साथ. यस सर, Yes. छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल. ओके, और कोई? Bihar, UP. Okay, the interstate boundary between Bihar and Uttar Pradesh continue to fluctuate due to the frequent change in the course of river. एक गंडक रिवर है, वो पहले जिस एरिया से, जैसे मान लो कि एट परसेंट फ्लो होती है वो बिहार में है, ठीक, लेकिन अगले साल ही फ्लड आएगा वो चली जाती है यूपी में. तो बिहार में, यूपी में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. जो ड्यूरिंग कोविड-19 जो गंगा में जो आपके डेथ्स लाशें जो मिली थी, है ना, वहां पे भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था कि बिहार वाले बोल रहे थे ये आपके एरिया में है, यूपी वाले बोल रहे थे हमारे एरिया में नहीं है, आपके एरिया में. सो बेसिकली बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, related to 6 places of Dehradun and also related to Shimla district. Then Haryana, UP के बीच भी है. Then Haryana, Punjab, Odisha, Andhra Pradesh. So between Odisha and Andhra Pradesh, the boundary dispute relates to the maybe 63, more than 60 villages. Okay, and then Odisha and Jharkhand, then Odisha and Chhattisgarh. So Odisha के जो डिस्प्यूट्स है 3 स्टेट के साथ, आंध्र प्रदेश के साथ, उड़ीसा के साथ एंड छत्तीसगढ़ के साथ. उड़ीसा ने अपना स्टेटहुड डे भी मनाया था. कितने तारीख को? उत्कल डे भी उसे कहते हैं. April 1. 1 अप्रैल. ओके. उड़ीसा पहले बिहार का पार्ट था, है ना? कौन सी ईयर में उड़ीसा अलग हुआ था बिहार से? 1937. 36. 36 सर. ओके, और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? March 22, 1912. ओके, सो पहले बिहार में आपका एट परसेंट बात करते हो, झारखंड, उड़ीसा ये सब आते थे. फिर 1936 में उड़ीसा जो सेपरेट होता है अपने बिहार से,
फिर क्या होता है 2000 में झारखंड भी बिहार से जो है वो अलग हो जाता है. ओके, so now let's move ahead and let's discuss how does the constitution deal with the interstate dispute. Okay, interstate dispute. So at the time of independence in 1947, India consisted more than 565, okay, NCRT, 71 disjointed princely state and provinces directly governed by the British. So there were state reorganization commission, and it was set up on 1953 after nearly 2 years of study, and merged states, okay, or merged princely state into 14 states or 6 union territories. And currently we have 28 states and 8 union territories. Okay, and friends, the draftsman of India's constitution had erred grievously in ignoring the problem of interstate disputes, especially interstate boundaries. Okay, so constitution makes no provision for swift and binding decision of such disputes, but there is Article 262. Article 262. And Article 262 says it is on the adjudication of disputes relating to waters of interstate rivers or river valleys. Okay, and there's no comparable provision on disputes on land. So basically Article 26 talks, or it is related to water disputes. Okay, it is related to water dispute. So how Supreme Court deal with the dispute arising between state by the using of Article 131. बता देता हूं. By the using of Article 131. So Article 131 of the Constitution of India based the Supreme Courts with original jurisdiction over any disputes arising between the states or between the center and state. So Supreme Court had original jurisdiction, okay, in any disputes between the government of India and one or more states, between the government of India and any states, or states on one side and one or more other states. Okay, and also between two or more states. So basically we can say कि disputes, any types of disputes comes under the Supreme Court and under original jurisdiction. So original jurisdiction के examples, could you tell me the or examples of original jurisdiction? कौन कौन से subjects original jurisdiction में आते हैं? We have already shared कि any type of disputes. और कुछ आते हैं क्या? नहीं. Article 71. According to Article 71, disputes related to president and vice president election comes under the original jurisdiction of Supreme Court. और कोई? General election of MLA Not election of MLA. disputes. It comes under the high courts. Lok Sabha election, Rajya Sabha election, or MLA election, that means state legislative election, does not comes under the original jurisdiction of Supreme Court. Okay, so लोकसभा के अगर disputes हैं या राज्यसभा के disputes है तो आपका जो हाई कोर्ट है उसे आपका क्या कर सकती है, अपना jurisdiction दे सकती है उस पे. Now let's move ahead and let's discuss new topic. So we have discussed about the, you can say na कि Assam Meghalaya border dispute partially resolved. Anyone, do you have any doubt? No, sir. Okay. So now Sir, let's partly move ahead. resolved. Yeah, बोलो. Sir, partly resolved means there are some interim order passed by the Supreme Court, or what about the order passed by the Supreme Court, sir? No. This you can say that agreement was done by the two state government, Assam and Meghalaya. Yeah, there were positions of होम मिनिस्टर, बट होम मिनिस्टर का कोई रोल नहीं था. ये जो आपका दो स्टेट्स के बीच में जो डिस्प्यूट है उसे आपका किया गया है. और यहाँ पे पार्शली का मतलब ये है कि पूरा डिस्प्यूट नहीं हुआ है. जो अभी मैंने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि देयर इज प्रॉब्लम इन ऑलमोस्ट 12 एरियाज.
तो 6 एरियाज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की गई है. ओके, ये है यहाँ पे पार्सली का मतलब. सो नाउ let's move ahead and let's discuss a topic related to defining minorities in India. Defining minorities in India. So basically, minorities topic is in frequent news. Okay, is in frequent news, and you'll have to cover. You'll have to understand. And this topic is related to polity and governance. Okay, so why am I going to discuss this topic? Basically, there were a petition, okay, before the Supreme Court seeking the identification of Hindus, okay, Hindu as minority in states and union territories where their numbers are below other communities. Okay, so let's move ahead and let's discuss basically the petition. Okay, talks, you can see now numbers, number of 2011 census, and the population of Hindu is less than 50% in states and union territories of Lakshadweep, Mizoram, Lakshadweep, Mizoram, Nagaland, okay, Mizoram, Nagaland, Meghalaya, Jammu Kashmir, Meghalaya, Jammu and Kashmir, okay, Meghalaya हो गया, Jammu and Kashmir, then Arunachal Pradesh, Manipur, Punjab, Arunachal वॉइस ड्रॉप हो Pradesh, रहा है सर. Manipur, Punjab, ओके, पंजाब. सो इन सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में अगर आप देखोगे हिंदूज के नंबर्स जो है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज लेस देन 50%. सो व्हाट डज द टर्म two occasions in Article 29 and Article 30. Okay, Article 29 and Article 30. We'll discuss these things. Okay, and also we can say the Constitution of India recognized two types of minorities. Which two types? Religious minorities. Sorry, आपकी आवाज नहीं आई क्लियर. कोई प्रॉब्लम? आवाज नहीं आ रही है. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है. क्या हो गया भाई? जो आपकी पिक्चर है वो स्क्रीन पे आ गई. जस्ट मिनट, जस्ट मिनट. नाउ अब ठीक है सर. okay, so now let's discuss about the minorities. So basically Indian constitution recognized two types of minorities. So which one? So first of all let's discuss the religious and also linguistic. Okay, religious and linguistic. You'll have to keep in the mind only religious. So religious में हिंदू को छोड़ दो, बाकी सारे जैसे कि अगर first of all Muslim, okay, then Christians, then Sikh, then Buddhisms, then Jainism, and last one Zoroastrian. Okay, last one Zoroastrian. So basically, Indian Constitution recognized two types of minorities, and we'll have to remember only religious minorities, and there are 6 religious minorities जो recognize किया गया है आपके Constitution के द्वारा. Now let's move ahead and let's discuss. I told you there are two articles, Article 29 and Article 30 talks about the minorities. So Article 29, what Article 29? Article 29 says that any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture of its own shall have the right to conserve the same. Basically देखो आर्टिकल 29 yes talks about the minorities, but according to आर्टिकल 29 anyone सभी लोगों के पास आपका माइनॉरिटीज हो या मेजोरिटीज हो, ओके, उनके पास क्या है, एक राइट्स हैं कि वो अपने लैंग्वेज को, देयर स्क्रिप्ट्स, कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं.
and no citizen shall be denied admission into educational institution maintained by the state receiving aid out of state funds on grounds only of first religion, second race, third caste, fourth language, or any of them. Okay, or any of them. So Article 29, yes, it is related to minority, but Article 29 also talks about the majority. पॉलिटी में बहुत सारे लोग आपको पढ़ाएंगे नहीं, ना ही आपको बताएंगे, सिर्फ वो बोल देंगे कि आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड है, इट टॉक्स अबाउट द माइनॉरिटीज, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज. आर्टिकल 29 also talks about the rights of majority, because in Article 29 you can see कि there is no clearly mention the word ki minorities. Okay, so Article 29 says ki any section of the citizen residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script, or culture of its own shall have the right to conjure the same. Now, let's discuss about the Article 30. Article 30, all minorities. Article 30, yeah, discuss about the minorities. All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice. Not only establishment, also administers. That means the managements. Okay, and states shall not in granting aid to educational institution discriminate against an educational institution on the ground that it is under the management of minority, whether based on religion or language. Okay, so basically we can say कि minorities groups have, okay, powers to administer and establish the educational institution. And section 2, okay, section 2 also you can say key of the National Commission for Minorities Act 1992 had granted minority status to 5 communities based on their national population. Okay, so basically Muslim is the largest minority group in India, 14%, then Christians, Sikh, Buddhist, Parsi, or Jain. So basically we can say ki Constitution recognizes 6 types of minorities, and Section 2 of National Commission, Section 2, subsection C of National Commission for Minorities Act talks about the minorities, 5 communities. Okay, so this is very very important. Now, what are the other important, okay, articles related to minorities? Yeah, other important articles talks about the minorities right. Article 15, okay, and Article 15 now prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Article 17, okay, prohibits untouchability. Then Article 25 to 30, Article 25 to 28 related to right to freedom of religion. Then Article 29 and 30 is related to cultural and educational rights. Then Article 25 provides the right to practice any religion. Okay. Then Article 26 allows religious institution to be open. Article 27 provides that no person shall be forced to pay any taxes which is not mandatory. Article 28 provides that there shall be no religious instruction to be followed in any particular educational institution. Okay, so please keep it in the mind. So we have discussed about the defining minorities in India, and also what are the recent, okay, news related to minorities. So anyone had doubt? Hello. Yes. Hello. Excuse me, sir. हाँ बोलो. Hello. हाँ hello. Sir, am I audible, sir? Yeah. Hello. Hello. Sir, this article. Hello. Yeah बोलो. Sir, Article 29 and Article 30 says, sir, difference is what, sir? Is this Article 29, it defines the rights of minorities that is related to religious and linguistics, sir, 29. And 30 is the administrative process of the minorities. Or what way? What you can say on the defines? Basically, Article 29 talks about the protection of interest of minorities. Okay, so protection of interest of minorities. Okay, sir. And Article 30 talks about rights of minorities to establish and administer educational institution. Clear? Okay, sir. Okay. Okay, sir. Fine. Thank you, sir. Welcome. So, anyone, do you have any question? Or, okay, I will. Okay. So, basically, Article 29 talks about the protection of interest of minorities. Okay, so protection of interest of minorities. And Article 30 talks about rights of minorities to establish and administer educational institution. Clear? Okay. Okay, sir.
Is screen visual? Yes, sir. Okay, thank you. So now let's Yes, move sir. ahead. Oh, thank you so much. Now let's move ahead and let's discuss a new topic. Okay, and the new topic, just a minute. The threat of stagflation in Indian economy. So we'll discuss, and maybe we have okay, we had a discussion before. Okay, that means we had the discussion on this topic maybe in any previous class. So no problem, I'm going to discuss about the new topic. Okay, and the new topic is related to stagflation. So first of all, I would like to know from all of you, what do you understand, okay, by the term inflation and also the term stagflation? Anyone, could you tell me, what do you understand by the term stagflation? Or first of all, let's discuss the term inflation. Sir, it means that the degradation or any slow process of any development, like economic, like education, like employment. So it is a Okay, depletion or the decrease of something, sir. okay, okay. So हाँ, कोई और बोलना चाह रहा था, बोलो. What happened? So the price rise of any essential commodities, any particular period. Okay, please give me 2 or 3 minutes. Please wait. Okay, so now let's move ahead and let's discuss a new topic. And the new topic is a threat, okay, of stagflation in Indian economy. So first of all, this topic is related to Indian economy. Okay, this topic is related to Indian economy. या मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, व्हाट डू यू नो अबाउट द इन्फ्लेशन और स्टैगफ्लेशन? सो माधुरी ने बताया था आपका उसके बारे में, स्टैगफ्लेशन, इन्फ्लेशन.
What is the meaning of inflation? What is the concept of inflation? What do you understand by the term inflation? Please try to Sir. participate. Yeah, please tell me one by one. Yeah, Sudhiranjan. Sir, I can Okay, okay, very good, no problem. और कोई? So Sir, the it is price the rise of rising prices. any essential commodities or goods. Okay, okay, okay. Yeah, Subhendu. So it is Sir, the rising price of essential commodities. Okay. Yes, Pradeep. sir, inflation occurs combination of slow economic growth and high unemployment and rising of essential commodities. Okay, okay. Now I'm going to tell you. Okay, just a minute. Yeah. So first of all, okay, let's discuss with the context. Okay, with rising tension between Russia and Ukraine, disrupting supply chain and increasing inflation, they are increasingly warning about stagflation in India. So first of all, let's discuss the meaning of inflation. What is inflation? Inflation is a price, okay, increase in price of goods and services within the specific period of time. Okay, within the specific period of time. And first of all, friends, also you can say ki the term inflation refers to a sustained increase in the average price level. Okay, average price level of all goods and services, not just a few of them in an economy over a time. So reasons of inflation, basically inflation happens when the money supply grows at a faster rate than the economy can producing goods and services. Okay, and now let's come to the stagflation. What is stagflation? So basically for the stagflation we'll have to understand inflation. So I told you what is inflation. Basically, friends, stagflation when inflation exists in tandem with slow economic growth and a high employment. So basically we can say ना कि inflation भी होगा लेकिन उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा, उसका फायदा नहीं मिलेगा, तो इन्फ्लेशन प्लस होगा. ओके, देन उसके बाद जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी प्लस होगा, ज्यादा होगा. एंड उसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं कि स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, so minus economic growth. So this led to the stagflation. So stagflation when inflation exists in tandem with slow economic growth and high unemployment. Typically we can say that these economic conditions do not occur together, and unemployment and inflation tend to be inversely correlated. And the flips curve. Okay, flips curve talks about कि अगर आपका inflation है, if there is inflation in economy, it led to the higher, okay, economic growth and also higher employment rate. Okay, not unemployment rate. लेकिन अभी फ्लिप्स कर्व जो है आपका क्या हो चुका है, बर्बाद हो चुका है. इट इज नॉट, वी कैन से नाउ फ्लिप्स कर्व इज नॉट more relevant, okay, to understand the economy. And then friends, also we can say कि so we can say now कि unemployment rate increase, inflation usually decrease and vice versa. And of course, friends, the stagflation of the 1970s illustrated this relationship is not always stable or predictable. Okay, so what are the factors responsible for stagflation? So we'll have to understand the factors. So basically, we can say कि there are two root causes, okay, of stagflation. Basically, supply shocks. First is supply shocks. Then second is fiscal and monetary policy. Fiscal policy means government policy. A monetary policy will be enjoyed by RBI, central bank. Fiscal and monetary.
fiscal and monetary policy. Okay, so what is the meaning of supply shock? Supply shock is anything that reduce the economy's capacity to produce goods and services at given prices. Just an example, लेते हैं, throughout the COVID-19 pandemic, there have been supply shock in labor with a fewer people working, supply shock in good, for example, semiconductor shortage, which started even before the pandemic. Then supply shocks in services, just like as a people postpone elective surgeries and other health care procedures. And then poor fiscal and monetary decision means poor fiscal monetary decision prompts of stagflations. So what are the consequences of stagflation? Yeah, for the mains examination, we'll have to understand what are the consequences of stagflation. Can you think what will be the consequences of stagflation? क्या आप सो बता सकते हो? सर ग्रोथ रेट स्लो हो जाता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है. ओके, नेक्स्ट. जो इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर पड़ता है सर. ओके, स्टैगफ्लेशन इज इक्वल टू अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कर लो. Sir, with rising, sir, with yes, sir. Sir, with high inflation and stagnation, there may be, sir, there may be create in economics, sir, which is characteristic by sir, highly rapidly rising on prices, and there is possibly no any economic growth, and which brings about high unemployment. Okay. I'm going to tell you what are the consequences. Yeah, what will be the consequences? So basically, we can say now we have already So discussed. depression will be occur after Yes. the inflation. Yes, of course. First of all, we have discussed that stagflation relates to slow growth, high unemployment, and fast inflation. So basically, you can say it will lead to the significant pressure on economy. Significant pressure on economy. मैं आपको बता ही देता हूँ. Significant pressure on economy. Significant pressure on economy. And also distort investment decisions. So investment also, अगर एक growth ही नहीं होगा तो कोई investor क्यों invest करेगा? Okay, so it will impact the investment. It will impact the investments. Then damaging to fixed income markets. Okay, basically we can say it will also impact the economic systems. Yeah, development of economic system. In a simple line, development या वेल्थ क्रिएशंस, कुछ भी हम लोग रख सकते हैं. ओके, एंड देन एज अ कंज्यूमर्स स्पेंडिंग स्लोज, कॉर्पोरेट रेवेन्यूज डिक्लाइंस, एंड एक्सावेटिंग द ओवरऑल इफेक्ट ओके ऑन द इकोनॉमी. ओवरऑल इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी. सो बहुत सारे चैलेंजेस हो सकते हैं. ओके, ये आपका इनडायरेक्टली अगर बात करते हो, इट कैन ऑल्सो थ्रेट टू बी इंडिया. बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट रेट अगर हाई होगा तो हमारे जैसे आपके जैसे जो युवा होंगे करेंगे क्या, है ना? तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक. सो बेसिकली देयर आर लॉट्स ऑफ इम्पैक्ट एंड आल्सो यू कैन से कि रिजल्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, यू विल हैव टू थिंक. नाउ लेट्स मूव अहेड एंड लेट्स डिस्कस. ओके, चलो अब आते हैं अपने आज के एजेंडा पे. आज मैं 1 घंटे में नहीं दिया था क्वेश्चन. आई एम गोइंग टू गिव यू द मेंस क्वेश्चन. यू विल हैव टू राइट. ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes, 1 minute. प्लीज ओपन योर चैट बॉक्स. ओके, मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया. व्हाट इज स्टैगफ्लेशन?
What steps should be taken to control stagflation in Indian economy? No need to, you can say na ki go through the nets. Okay, you'll have to write in your own words. चीट नहीं करना है, आप अपने हिसाब से लिखिए जो हम लोगों ने समझा है. एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस ओके अबाउट दिस क्वेश्चन. सो यू हैव 10 मिनट्स एंड एवरीवन, क्वेश्चन विजुअल्स है, आप लोगों ने देख लिया होगा. कितने लोगों ने क्वेश्चन देख लिया है बताओ तो? क्वेश्चन देख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना, इतना तो बता दो. Yes, sir. Yes, sir. You can Yes, sir. see, Yes, sir. sir. Okay, thank you. So now your time starts now. You have 10 minutes. You'll have to write within 150 words. Okay. And I'm waiting for your answer. Please forward. Okay, कैसे फॉरवर्ड करना है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आंसर आज सभी लोग लिखेंगे. एक दो लोग का आता है, फिर रिव्यू करने में भी मजा नहीं आता. जब बहुत लोग आता है तो एक साथ पढ़ते हैं, फिर रिव्यू करने में भी मजा आता है. ओके, एंड प्लीज डोंट गो एनीवेयर. You'll have to write. So your time starts now.
नाउ योर टाइम इज ओवर. ओके, तो अब आप लोग का टाइम जो है हो गया. ठीक. सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे आप लोग इसको आंसर लिखोगे? सबसे पहले अगर आप देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. Simply, what is stagflation? First part of this question. Second part, what steps should be taken to control stagflation in Indian economy? So, here's two parts of this question, and you will have to fulfill the demands of all of these parts. Basically, you can say na ki what is stagflation is the first part, and second you will have to suggest the steps. Okay, steps should be taken to control stagflation in Indian economy. So first of all, how you can start? How can you start? You can directly start with the definition. Okay, or you can also start with the, you can say na ki context, कि why this topic is in news, why this topic is in news. जब भी मैं आपको कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उसके जरूर कॉन्टेक्स्ट में आपको बताता हूँ. ओके, so first of all, for this type of question you'll have to write contextual introduction. That means कि you can write context, and then you'll have to write the body parts, and in body parts you'll have to discuss various causes of looming stagflation in India. What are the main causes? And then, okay, steps. Ki, how that means ki you'll have to suggest. So steps needed to control stagflation in Indian economy. And in the last, you can say write suggestive conclusion. So first of all, you can start with stagflation. कि stagflation is a situation, एक situation है जहाँ क्या होता है, inflation rate is high, economic growth rate slows, unemployment rate high. Okay, so you can write and you can start with the definition. And then regions of the stagflation. First of all, region जो है, we have already discussed fiscal and monetary policies. Okay, so that means कि reduction in consumption, then price of the crude oil. Okay, and then after that also you can say decrease credit availability, unemployment rate. Okay, and also inflation. So steps should be, you can say now, fiscal policies and monetary policies, then better rational wage control, yeah, rational wage policies. Then there should be also, you can say now, focus on supply side, and then there is a need of labor reforms. So basically वी कैन से ना कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसको पहले ही कंट्रोल कर लिया जाए, नहीं तो कब हाइपर इन्फ्लेशन में बदल जाएगा, जो कि कंट्री के लिए बहुत ही आपका चैलेंजेबल हो सकता है. ओके, सो वी हैव डिस्कस. सो यहाँ पे अनुपम अभिलाष जी का स्टैगफ्लेशन सिचुएशन विद इन्फ्लेशन रेट इज हाई, significantly high, pressure dilemma for economic policy since action needed to lower inflation may accelerate unemployment, steps should take. अनुपम, आपको जो आंसर लिखना था on a blank page, okay, in upcoming classes you'll have to write answer a blank page, and after that you can forward me. Sir, how can I forward to you my answer? Okay, I'm giving you my contact number. You can forward me on WhatsApp. Okay. Okay, sir. So we have discussed lots of things. Okay, I also give you the information ki how can you write or how can you tackle this type of question. So this is all about for today class, and I hope कि आप लोग के साथ बहुत सारे डिस्कशन हुआ है, आप लोग को जरूर फ्रूटफुल होगा और सिग्निफिकेंट होगा, और you can easily go through these topics because I will share slides. Okay, please go through the slides because in slides बहुत सारे topics है जो prelims के भी हैं, and try to make your own notes and also focus on revision. रिवीजन इज द की ऑफ द सक्सेस. मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ कि रिवीजन क्या है, एक आपका की होता है सक्सेस को लेकर के. ओके, सो प्लीज फोकस ऑन रिवीजन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक. इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू मे कॉन्टेक्ट मी. ओके, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. So this is all about for today class. So now let's come to the last portion of this class. I'm going to ask, okay, your feedback, your views. So first of all, sorry for technical glitch, okay, technical problem. And now let's start with the Anupam. Yeah, Anupam, please tell me what do you think about today class.
Anupam? Swagitka? Sir, the class is very effective for us, and I got more knowledge about those topics. Thank you so much. Sujit? Subhendu? Kanhu? Yes, sir. Today class is very valuable for us. Thank you. Okay. Ijak Dung Dung? Maybe this is first class for Anupam and also Ijak. Okay. Madhuri? Yes, sir. Today's session is more interesting and effective, sir. We got more knowledge and we try to, sir, amplify all the things by making note. Thank you, Good. sir. Thank you so much for joining this class. Okay. And please, if you are preparing for civil service, okay, I'm talking for everyone. If you are preparing for civil service, so you'll have to participate. Okay. Your views should come out. आपके जो विचार से views है वो बाहर आने चाहिए. Because this is very important for your personality development. Let's take examples now कि you can crack prelims examination, you can crack mains examination, but if you not get a good marks in interview, तो क्या फायदा उस चीजों का. सो प्लीज ट्राई टू पार्टिसिपेट ऑलवेज. मैं हर एक क्लास में बोलता हूँ कि आप सभी लोग को पार्टिसिपेट करना चाहिए. ओके. Participation is very you can say na ki important, and it should be compulsory binding. Okay. Think ki yes, I will have to discuss and I will discuss. If you don't know anything, you can easily say ki sir I don't know. Okay. But try to participate. Participation is, जब तक participation नहीं होगा तो डेमोक्रेसी भी सक्सेस नहीं हो सकता है. तो ठीक वही, जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, टू वे कम्युनिकेशन हमारा नहीं होगा, तो फिर क्या होता है, मजा नहीं आता है. और आप यू कैन इजिली लर्न न्यू थिंग्स. इफ यूल पार्टिसिपेट यूल गेट न्यू टाइप्स ऑफ थॉट्स, न्यू टाइप्स ऑफ पॉइंट्स. ओके. और वैलिड पॉइंट्स. ओके. So thank you so much for joining this class. We'll meet soon. And please go through the all of the, you guys go through the slides, and if you face any types of problem, you may ask, you may contact me, and I promise you I will reply as soon as possible. Thank you so much. Bye bye. Good night. May God bless all of you. Thank you, sir. Good night.